सारे कोशिश कर रहे हैं समझने की कि इकोनॉमी के क्या इश्यूज है। आई नो मीडिया और मिनिस्टर्स तो सिर्फ फिस्कल खेलते हैं, उनको फिस्कल के अलावा इकोनॉमी में कुछ नजर नहीं आता। और फिस्कल में भी 2 नंबर होते हैं, भीख मांगना या ना मांगना, बाकी मेरा ख्याल कुछ नहीं होता। तो या टैक्स लगाना, सॉरी एक और भी है टैक्स लगाना। तो हम इससे हट के वी ट्राई एंड लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, वी ट्राई एंड सी व्हाट्स रॉन्ग विद द इकोनॉमी कि जी माशाल्लाह कॉलोनियल सिस्टम चली जा रहा है। कॉलोनियल सिस्टम को हम पालते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद टैक्स और उससे चल जाए। तो आज हमारे साथ है फैसल नकवी साहब। फैसल नकवी साहब बड़े अच्छे लॉयर हैं, बड़े मशहूर लॉयर हैं। फैसल नकवी साहब ने एक ये कॉर्पोरेट लॉ पे बहुत काम किया हुआ है, रिकोडिक भी इनकी कारकर्दगी है। बट हम आज इनसे बात करेंगे, रिकोडिक पे एक और दिन करेंगे, आज करेंगे बात कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी पे, बिकॉज इन्होंने कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी पे काफी काम किया था। कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेट फैसल एक्सप्लेन इट यू कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बट फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट लाइक लाइफ, death has to happen in the corporate structure. Also, it's a living entity, so it must die, and we must prepare a law on how to make it die. Or sorry, let it die, because it dies of natural consequences, but the law must facilitate its death. वरना जैसे हमारे यहाँ होता है सिक यूनिट पड़े रह जाते हैं। फैसल नकवी साहब एज आई सेड बहुत अच्छे लॉयर हैं। इन्होंने क्या कहते हैं बड़े मेजर केसेस किए हुए हैं पाकिस्तान में। इन्होंने PIDE में एक दफा पहले भी लेक्चर दिया था ऑन लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो आज लेट्स टर्न टू फैसल अगेन टू हियर अबाउट कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी लॉ। सो ओवर टू यू फैसल। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी में डॉक्टर साहब ने जो कहा ना कि इट्स सॉर्ट लाइक द साइकिल ऑफ लाइफ, और टू द लायन किंग में है ना सर्कल ऑफ लाइफ दैट हैपेंस, दैट अप्लाइज टू बिजनेसेस एज वेल। तो एक तो ये है कि जी कंपनी पैदा होती है और फिर उसको यू नीड अ मैकेनिज्म वेयर बाय यू कैन टेक द एसेट्स एंड द एलिमेंट्स अपार्ट एंड रीयूज देम इफ द कंपनी डाइज। दैट्स नॉर्मली रिफर्ड टू एज लिक्विडेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिक्विडेशन टुडे। लिक्विडेशन पाकिस्तान में एक है सिस्टम, वो चलता है वाइंडिंग अप अंडर द कंपनीज एक्ट नाउ। इट्स नॉट अ वेरी गुड सिस्टम, बट चले वो एक अलग चीज है। मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कंपनी इतनी बीमार हो कि उसको बचाने की कोशिश की जाए, बजाय इसके तो उसको मार दिया जाए, तो फिर हम क्या करते हैं? तो द रीजन व्हाई लॉज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिक्विडेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट you can call it, let's say, rehabilitation, or you know, in the US it's a distinction between chapter 7, which is liquidation, and chapter 11, title 11, which is reorganization. आप उसको reorganization कह लें, rehabilitation कह लें. Essentially the point is to save the company from being liquidated and from being bankrupt. उस टॉपिक के ऊपर मैंने काम किया था. Now पहला तो सवाल आप लोगों का ये होना चाहिए कि भाई why do we care? एक कंपनी फेल हो रही है, उसको फौरन आप खत्म करें, उसके पुर्जे करें और उसको फिर आगे जो है ना हैंड द एसेट्स ओवर टू समबडी एल्स। तो आंसर नंबर 1 वुड बी कि द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ कंपनी एंड मेकिंग श्योर कि इट्स बिट्स एंड पीसेस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर पीपल इज फेयरली इनएफिशिएंट इन पाकिस्तान। सेकेंडली, इवन इफ यू हैव एन एफिशिएंट लिक्विडेशन प्रोसेस, तो देयर इज अ सोसाइटल इंटरेस्ट इन मेकिंग श्योर कि एक कंपनी जो है वो चलती रहे। जब एक कंपनी काम करती है तो उसके जो लोग हैं, जो उसके जो एम्प्लॉइज हैं, उन सारों की जिंदगियां जो हैं वो उसके साथ जुड़ी होती हैं। इट्स नॉट जस्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल बट द लाइव्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, द लाइव्स ऑफ द कम्युनिटी। एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी। तो इट्स नॉट ओनली द डॉलर्स एंड सेंट्स, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंपनी व्हिच आर वर्थ प्रिजर्विंग। अब ये इशू जो है आपको याद होगा सबसे ज्यादा, खैर आप लोग यूर ऑल इकोनॉमिस्ट है, बट 2008 में जब यूएस में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, तो द यूएस गवर्नमेंट स्पेंट बिलियंस एंड बिलियंस, आई थिंक अबाउट $750 बिलियन ट्राइंग टू रेस्क्यू डिफरेंट कंपनीज। क्योंकि अगर एक कंपनी, फॉर एग्जांपल, अगर जनरल मोटर्स के ऊपर डिस्कशन थी कि जनरल मोटर्स गोज बैंकरप्ट, तो उसके सारे सप्लायर जो है वो भी उसके साथ फंस जाते हैं और उसका फिर नॉक ऑन इफेक्ट होता है सोसाइटी में। सो देयर इज अ सोशल इंटरेस्ट इन ट्राइंग टू कीप a company alive, even if at a reduced debt level, which is superior to that of the debtor. तो डॉक्टर साहब तो क्योंकि प्योर शिकागो है, तो उनकी जिंदगी में तो मेरे ख्याल से सोसाइटल इंटरेस्ट तो होते नहीं, लेकिन फ्रॉम अ गवर्नेंस पर्सपेक्टिव हमें ये मानना पड़ता है कि
it quite often is कि for example अगर एक कंपनी जो है वो अगर 100 करोड़ के डेट के ऊपर काम नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसका डेट रिस्ट्रक्चर हो जाता है to 70 करोड़, then maybe it's a good thing for the company and maybe it's a good thing for society and somebody needs to have that option available. उसके अलावा एक जेनेरिक जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे कवानीन में एक मकसद ये भी होना चाहिए कि वी नीड टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी, अ सेफ्टी नेट फॉर रिस्क. अब अमेरिका में ज्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो शुरू होती हैं, वो चलती हैं, बहुत सारी फेल हो जाती हैं, लेकिन फेलियर से लोग तबाह नहीं होते. पाकिस्तान में जो है वो सिस्टम, वो खासा फर्क है. यहाँ पे आप अगर आपकी कंपनी फेल होती है तो आपकी फैमिली फेल होती है, आपकी पूरी जायदाद तबाह होती है, वो उसके साथ रिस्क बहुत ज्यादा अटैच्ड है. सो यू नीड टू encourage risk taking in the economy as well. That's also one reason why you need to have a good corporate rehabilitation sort of act. अच्छा, इसमें जो कवानीन है उसमें फर्क किस्म के आते हैं. लेकिन तो ये एक, लेट्स स्टेप बैक फॉर अ सेकंड. एक तो इंटरेस्ट है सोसाइटी का कि कंपनी चलती रहे. एंड नाउ अगर इफ यू सो दैट कैन बी टेकन टू एन एक्सट्रीम एज वेल. एक है डेटर का इंटरेस्ट, कि सॉरी क्रेडिटर का इंटरेस्ट, कि मुझे मेरे पैसे मिले, बाकी दुनिया तबाह हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. बीच में यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म व्हिच बैलेंसेस दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव. तो एक अप्रोच जो है, मतलब कि 2-3 अप्रोचेज हैं. एक है जिसको आप कह सकते हैं स्टेट कंट्रोल, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर वन एस्पेक्ट ऑफ दैट. तो ये मलेशिया में और ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में खास तौर पे 98-99 में बहुत ट्राई हुई थी. दे वर फेयरली सक्सेसफुल. सो होता ये है कि अगर कंपनी जो है वो फंस जाती है तो उसका डेट जो होता है, या बैंक डेट जो है, दैट इज हैंडेड ओवर टू अ स्पेशलाइज्ड एंटिटी, एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके पास एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, which can then take over, which can reorganize the company, which can run it and exit at a profit. So Malaysia mein there was an entity called Dana Harta which did this. In Pakistan mein we had something called the CIRC, the corporate something investment whatever rehabilitation company. उसके ऊपर however there was a sunset clause because Pakistan में उससे पहले जो हमारे पास जो ऑप्शन जो थे, the state controlled sort of rehabilitation plans थे, I think section 296 of the Companies Ordinance of 1984. उसमें होता ये था कि आपकी कंपनी के जब मसले होते थे तो सारे टेक्सटाइल वाले जो थे वो जाते थे और वो सरकार से कहते थे कि हमें पैसे चाहिए, हमें रीशेड्यूल कर दें. एंड बिकॉज यू ऑल्सो हैड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक्स, व्हाट वुड हैपन इज योर डेट वुड गेट रोल्ड ओवर, योर इंटरेस्ट वुड गेट फ्रोजन एंड एवरीथिंग कंटिन्यूड ऑन पेपर. ना आपको पैसे मिलते थे, ना आप पैसे देते थे. सो यू हैड दिस वेरी फेक इकोनॉमी गोइंग ऑन. सो स्टेट कंट्रोल्ड systems wind up being problematic because you wind up with rent seeking and elite sort of intervention जिसमें किसी का फिर नुकसान नहीं होता. The second option is sort of the traditional common law creditor control option, जिसमें मतलब इंग्लैंड में है कि you go bankrupt, आपके पास पैसे नहीं है, so the creditor will appoint somebody to take over your company and that's it. उसमें एक ऑप्शन जो अब इंग्लैंड में I think let's say about 20-30 years ago was introduced, कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट एंड से कि देखें हमें एक मौका दिया जाए कि वी कैन ब्रिंग इन समबडी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. वो कंपनी चलाएगा, उसको आप स्पेशल पावर्स दें और उसमें से सारों का भला है, ताकि वो क्रेडिटर्स को भी खुश रखेगा, डेटर्स एम्प्लॉयज को भी खुश रखेगा, सोसाइटी का भी फायदा उसमें. अब उस अप्रोच का मसला ये है कि पाकिस्तान में जो आपकी कंपनीज हैं वो एक आध के अलावा वो ज्यादातर जो है वो सेठ कंट्रोल है, और जो सेठ होते हैं उनकी नजर में उनकी कंपनी जो है वो उनकी मलकियत से फर्क नहीं होती. मोस्ट कॉर्पोरेट मेजर कॉर्पोरेट टाइकून्स डोंट रियली ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन देयर प्रॉपर्टी एंड कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी. तो यू कांट सोशली इन पाकिस्तान नोबडी इज गोइंग टू से कि ये ले मेरी कंपनी और इसको जाके आप चला लें, बिकॉज दैट्स द इक्विवेलेंट सेइंग कि ये ले मेरा घराना है, इसको आप जाके चला लें. It's a level of intrusion which is simply not going to be acceptable. So the UK approach is not going to work in Pakistan, was at least the conclusion. Now, sorry, just to step back a second, I started working on this issue in 2002, which is when I was brought in by the Banking Law Reform Committee, which was set up by the State Bank, and that was as a successor to the company corporate law reform committee, which had also looked at different things. And उससे पहले हुआ ये था कि जो हमारा बैंकिंग लॉ था
वो 2000 में अपडेट हुआ था और उन्होंने उसको बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा उसको सख्त कर दिया था। तो आप जाते थे, आपको फौरन डिक्री मिल जाती थी, वो जितना जो कुछ बैंक्स को चाहिए था उन्होंने सब कुछ दे दिया था, बट उसके बावजूद बैंक्स की रिकवरीज नहीं हो रही थी, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के आपके मसले मसाइल थे। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि 99 में नैब ऑर्डिनेंस भी आया था, तो उन्होंने कहा था जी जो बंदा विलफुल डिफॉल्ट करेगा उसको तो हम उठा के 14 साल के लिए जेल में डाल देंगे। तो दैट wasn't really working at that time. And to come back to the liquidation setup, हमारा जो वाइंडिंग अप का सिस्टम है उसमें एक तो बेसिकली होता ये है कि अगर आप बैंक जाता है, इन थ्योरी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस एंड नाउ अंडर द कंपनीज एक्ट, if you are owed a sum certain of more than whatever 50,000 rupees, you are entitled to go to court and say कि आपने मेरे पैसे देने हैं, ये लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे, इनको 30 दिन का नोटिस दें, अगर ये पैसे नहीं देते तो आप इस कंपनी को वाइंड अप कर दें। अब अदालतों के लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि अदालतें देखती हैं कि यार ये कंपनी है चल रही है, इसमें 100 बंदे, 500 बंदे, 5000 बंदे जो है वो काम कर रहे हैं, मैं इन सारों को बेरोजगार कर दूं, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो the courts then have come up with various arguments which make winding up actually quite problematic. So part of the reason for coming up with the rehabilitation law or the equivalent of Chapter 11 was to give courts more flexibility, ताकि अदालत जो है वो फिर डेटर से कहे कि जी देखें आपने अगर पैसे देने तो देने हैं, आपके पास अगर कोई प्लान है तो लेके आए, वरना होगा ये कि फिर हम वाइंडिंग अप ऑर्डर कर देंगे, फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। अच्छा, the reason again, one further element in this mix, and which is one of the main reasons which drove this whole thing, is मैंने पहले भी लेक्चर दिया था कि पाकिस्तान में आपका लैंड रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो इतना कंफ्यूज्ड है कि हमें पता नहीं होता कि किसकी जमीन किसके पास है। अब नॉर्मली जो है अगर किसी कंपनी ने पैसे बोरो किए हुए तो उन्होंने फिर कोलैटरल में तो उन्होंने जमीन ही दी होगी। अब चाहे आपने रजिस्टर किए हो ना किए हो, एट द एंड ऑफ द डे trying to sell land in execution of a court decree is going to be very difficult. उसमें मसले मसाइल हैं, उसमें इश्यूज हैं, उसमें होता ही है कि क्योंकि इतना लंबा टाइम लगता है, इसलिए अगर आप करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेके जाते हैं तो मुश्किल यह है कि आपको 50 लाख से ज्यादा की कोई उस पर बिड करेगा। अब अगर जो कहते हैं यार हमारे 5 साल 10 साल 15 साल तो अदालतों में लग जाएंगे इसके पीछे घूमते घूमते, हम फुल वैल्यू क्यों दें? क्योंकि वो पूरी वैल्यू नहीं देते, इसलिए जो डेटर होता है वो कहता है जी मेरी तो प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की है, आप क्यों 50 लाख ले रहे हैं, इसमें तो मेरा नुकसान है। इस सॉर्ट ऑफ इशू के ऊपर भी बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है। तो नेट नेट रिजल्ट ये था, इफ यू कैन लुक एट दी प्री सॉर्ट ऑफ यू लुक एट दी रेगुलेटरी एंड लीगल सेटअप, आपके पास एक वाइंडिंग अप का कानून था जो कि जिससे बैंक्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि वाइंडिंग अप उनको मिलती नहीं थी, और जब मिल भी जाती तो उसके बाद एसेट्स रिकवर करना बड़ा मुश्किल था। जो आपके पास बैंकिंग लॉ का सिस्टम था उसमें आपको डिक्री मिल जाती थी, डिक्री एग्जीक्यूट करने में अगेन जो है वो फंस जाते थे बैंक्स। नैब का सिस्टम जो है वो आया था बड़े सॉर्ट ऑफ फैनफेयर के साथ कि जी हम इन लोगों को मार मार के इनसे पैसे ले लेंगे, उसको भी 2002-2003 में अदालतों ने बंद कर दिया। उनका कि अगर सिविल डिस्प्यूट है तो पहले सिविल डिस्प्यूट डिसाइड होगा, उसके बाद आप नैब पे जा सकेंगे। वैसे भी बिजनेस कम्युनिटी की प्रोटेस्ट की बुनियाद पे उसमें एक सेक्शन डाल दिया गया था कि जी आपने अगर विलफुल डिफॉल्ट पे जाना है तो आप पहले स्टेट बैंक से परमिशन लेंगे। तो 2003 के बाद विलफुल डिफॉल्ट वाला जो सारा एंगल था नैब का वो तो जीरो हो गया। देखिए लैंड का एज आई सेड मसला ये है कि पाकिस्तान में कि नोबडी नोज, आई मीन आवर लैंड टाइटलिंग सिस्टम इज एक्सट्रीमली बैड। ठीक, यू डोंट नो as to who owns land, and land recover करना जो है, because it is your main security for corporate debts. तो बैंक्स का मसला ये होता है कि वो अगर अदालत जाते हैं तो उनको लेट्स से 3-4-5 हफ्ते में उनको डिक्री मिल जाती है। डिक्री के बाद उनको पैसे रिकवर करने के लिए दे नीड टू देन सेल द सिक्योरिटी, वहां पे वो जाके फंस जाते हैं। क्वाइट नॉर्मल फॉर डिस्प्यूट्स ओवर sale of security to take years. So that's why the banking system doesn't really work. I think I was talking about this in the context of the different systems. So the winding up system doesn't work because it's too abrupt. It seems to, judges don't want to kill companies. जो बैंक्स को सिस्टम दिया गया है कि आप जाएं जाके डिक्री ले अपना एग्जीक्यूट करें, वो फंस जाता है बिकॉज उनको
चीजें मिलती नहीं वहां पे, और वो फिर उनकी लिटिगेशन जो है वो साल दर साल चलती रहती है. सो the idea was, did I talk you through my analogy of a medieval siege or not? Hello? Sorry, I'm just trying to remember it. Go ahead, go ahead, did go I ahead. go? Okay, start, do it. I'm trying to remember if I walked through my analogy from medieval siege or not, because I don't know where I was. You didn't. Go ahead. Okay. So the point that I was trying to make is कि imagine पुराने जमाने में कि आपने this works better in the European context, but imagine कि ये एक किला है. उस किले को अगर आपने फतह करना है तो उसको क्या करना है आप तो जो हमारा सिस्टम है उसमें इस वक्त होता ये है कि आप पूरे उस you take over the land, you then have to sit there for a year or 2 years, destroy the entire countryside and starve out the people until you have nothing of value to get from them. वो सारे भूखे मतलब कि जो किले के अंदर हैं लोग वो मर जाते हैं, जो बाहर लोग हैं वो सारे मर जाते हैं, बिकॉज इट्स अ स्कॉच्ड अर्थ अप्रोच, ताकि उन तक कोई रोटी पानी ना पहुंच सके. दैट्स बेसिकली द वे इन विच बैंक्स नाउ अप्रोच दीज टाइप्स ऑफ डील. एंड वो इसलिए है क्योंकि असासियों का कंट्रोल जो है वो कंपनी के ओनर्स के पास है. उनके अलावा जो है उनकी कोऑपरेशन के बगैर आपके लिए रिकवर करना जो है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है. तो आवर आर्ग्यूमेंट वाज कि भी अगर आप एक डेटर फ्रेंडली सिस्टम लेके आएंगे तो जो बंदे किले के अंदर है आप उनको कह सकते हैं एक लिहाज से कि यार आप बाहर आके हमारे से बात कर ले, वी प्रॉमिस यू विल बी रीजनेबल, विल गिव यू सर्टेन बेनिफिट्स एंड विल गिव यू अ फेयर चांस टू सर्वाइव दिस. हो सकता है आपको फिर भी उसको फांसी दे दें, बट देयर इज अ गुड चांस कि आप बच जाएंगे. सो दैट वाज sort of the approach that we were taking at that time. And just to clarify, did I walk you through the different types of, I think I had already done the state control system, the creditor control system, and the debtor control system. Can you confirm that? Doc, did I walk you through the different? Did I walk you through the 3 different types of bankruptcy systems? You have state control, Yeah, that you creditor did. control, That you did. That you did. That you Okay, did. chalein. Sorry for all of this confusion, but I didn't. I mean, as per my computer, I was still sort of linked in there. Anyways, so based on this, as I said, we came to the conclusion that we needed a debtor-friendly system, and because we have good judges, but nonetheless everybody needs a little help, so we needed to adopt a system. You can't start something this complicated from scratch. You're going to wind up in trouble. So what we did was that we used the US law as a model, but then we simplified it. So if the US law can be seen as the equivalent of test cricket, first we simplified it down to 1 day, and then we simplified it down to T20. अब उसके elements क्या हैं इस कानून के? So the different elements, the way it works, and it's because the US system is now generally known. The point is that this is sort of like there is an identified series of elements. So it's not a mystery anymore कि क्या system काम करता है क्या नहीं करता. इस type के corporate rehabilitation laws में there are certain things that you want. So and certain things which are recognized, and आप उसके मिक्सचर कभी एक चीज एम्फसाइज कर सकते हैं कभी दूसरी चीज, बट बाय एंड लार्ज आपको पता है कि चीजें क्या करनी है. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमने इनको अडॉप्ट करने के लिए क्या कोशिश की थी. पहला तो मेरा ये पॉइंट था कि इसको एक ओपन एंट्री सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप आए और आप कहें कि जी देखें मेरी कंपनी बैंकरप्ट है और मुझे जो है इस कानून की प्रोटेक्शन चाहिए. अब प्रोटेक्शन क्या है? The most important protection that you get under the law is what's called an automatic stay. तो आपके खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सारे उसी वक्त वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं जब तक कि आपका बैंक्रप्सी का इशू जो है वो खत्म नहीं होता. सेकेंडली, जो मैनेजमेंट होती है दैट कंटिन्यूज इन पोजेशन, सो इट्स कॉल्ड अ डेटर इन पोजेशन सिस्टम.
अगर उनकी कोई चोरी पकड़ी जाए या कोई फ्रॉड पकड़ी जाए तो फिर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट एटलीस्ट इन द यूएस सिस्टम व्हाट हैपेंस इज कि इमेजिन कि एक बंदे के पीछे जो है ना वो चोर डाकू पड़े हुए हैं, वो भागा भागा जाता है, वो एक he goes to a place, he is given sanctuary for a while. Here, okay, everything will freeze. Take stock of your affairs, come out and then talk to people and tell them this is what you can do, this is what you can't do, and then we'll take it from there. As long as you're open and truthful, you will be allowed to continue in management of your company. और उसके साथ साथ एक उसको स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है कि when you have quite often when you have a company in trouble, then financing is an issue, because most companies will have one major bank and one major creditor which will have secured loans and quite often also a floating charge. इसमें सब कुछ जो है वो एक ही बैंक के पास होता है. So the company needs money to run, for example, to buy raw material, but it doesn't have anything which it can give as security. And जो बैंक है उसके साथ पहले लड़ाई होती है. So in bankruptcy laws, it's quite normal to find what's called debtor in possession financing, where you give a special benefit. क्योंकि जो secured creditor है आप उसके आगे छलांग मार के आ सकते हैं. So as I said, so it's open entry, debtor in possession, and you have an automatic stay along with debtor in possession financing. In the US, it's a much more relaxed system, I suppose. वहां पे you are given an initial period of 180 days, can then be, and normally is further extended to give the debtor time to settle its affairs, to let everybody know, and then to come up with a plan of rehabilitation. पाकिस्तान में बैंक्स के प्रेशर की वजह से उनका व्यू ये था कि हमारी कंपनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जो इन कंपनीज की मैनेजमेंट है उनको पता है कि इनके मसले मसाइल क्या हैं. They should be able to file a plan of rehabilitation on day one. So in Pakistan, when a debtor in possession seeks, let's say, security, or when a debtor seeks protection under the bankruptcy law, he is required, or that company is required, to file a statement of affairs on day one. And कानून में बहुत strict timelines हैं. I think it's 6 months plus a maximum period of maybe another 6 months, or 4 months plus another 6 months, something like that. मैं भूल रहा हूँ कि exactly क्या है. The further point that we needed to take into account was that you're not dealing with very sophisticated creditors or debtors in that sense. So I hope I'm not very close. So we wanted to build in alternate dispute resolution into this, because a lot of this requires, I've done bankruptcy in the US. I was originally a bankruptcy lawyer for a couple of years, many years ago. वहां पे क्योंकि जजेस सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो वो जो है वो क्रेडिटर्स और डेटर्स दोनों को जो है वो दे ऑपरेट एज अ कामिंग इन्फ्लुएंस. तो कोई बंदा ज्यादा कुछ मांगे या कुछ एक्सट्रीम पोजीशन ले, जज इज देयर टू से यार लुक दिस इज नॉट सेंसिबल. Pakistan में this type of situation, and I think Nadeem Saab is very clear that he doesn't think our judges are financially sophisticated. The idea was that you would have a mediator appointed who would sit with all parties and try and come out with a consensus plan and explain to the banks कि अगर ये कंपनी bankrupt हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, और अगर ये कंपनी to explain to the debtor कि जी आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे वरना आपके साथ बहुत बुरी होगी. अच्छा, the reason why this system works in the US is because you have what's called the option of a cram down. अब जो plan of rehabilitation होता है, that is supposed to be voted on by the creditor. So the secured creditors come first, then unsecured, and then other people, etc., etc. So in the US system, if the creditors don't accept it, then the debtor has the option of going to the court and saying कि ये मेरे साथ जाति करें, अगर मेरी कंपनी आप लिक्विडेट करेंगे तो 100 रुपए के बदले में उनको 50 रुपए मिलेंगे, मैं इनको 70 रुपए दे रहा हूं. Now that's a fiscal calculation which the judges take, but it basically lays down the standard which society has to apply. But is it more efficient to liquidate, or is it more efficient to keep? Is it more fiscally sensible to keep this company going? And if banks or if creditors act unreasonably, then you have this option, which is colloquially referred to in the US as the cram down option.
And when the company comes out of, if there is a plan of rehabilitation which is approved, then जो पुराने debts, everything is wiped out. So you have assistance. So we have this entire setup. The company goes in, it's supposed to come up with a plan. This is now I'm talking about the US version. That plan is eventually voted on, and that's how, and if it's voted on and it's approved, then the company's entire debt is restructured and you can move on. Now, Pakistan में जो इसका जो है equivalent, जो 283, 284 होता था, उसमें आपको 75% चाहिए था. Over here, so you need only a majority of the creditors, and in case the court agrees, you don't even need a majority of the creditors. So that's the difference here. Now, ये कानून जो है, जब, as I said, this was originally drafted in 2005, then further simplified and, made ready, or so far as I thought, in about 2008. हुआ ये था कि 2007-8 में सलमान शेख साहब जो थे, he was appointed as chairman SCCP. He was a big supporter of this, and we then pushed it very fast and got cabinet approval from the early days of the Zardari government. उस वक्त we needed World Bank financing because we wanted training for the judges, and at that point the World Bank took the view that ये कानून तो अच्छा नहीं है, and their perspective was that these were the height, the days in which the Washington consensus was pretty much at its height, and their view was कि आपको कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, जो क्रेडिटर होता है उसको पता है कि उसका इंटरेस्ट किधर, आप बीच में क्यों आ रहे हैं. And I mean, I thought that was and remains an incredibly stupid position to take. और मुझे याद है कि जब मेरी बहस हो रही थी वर्ल्ड बैंक वाले के साथ, तो मैंने उस दिन का अखबार उसको उठा के दिखाया था, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा था कि 1970 से लेकर आज तक जितने राइट ऑफ्स हुए हैं वो सब दोबारा री एग्जामिन होंगे. एंड माय पॉइंट टू हिम वाज कि in this setup, why would you expect banks to be economically sensible? Nobody is going to make a decision कि पैसे मुझे इधर से ज्यादा मिलेंगे, उधर से ज्यादा मिलेंगे. वो तो ये सोच रहे हैं कि मैंने आज राइट ऑफ दिया तो 20 साल बाद या मुझे नैब पकड़ेगी या मुझे कोई और पकड़ेगी. So at that point the World Bank didn't agree. We lost momentum. Salman Sheikh eventually left as chairman SCCP and the law died. बीच में हुआ ये कि for some reason this became an IMF conditionality. When it became an IMF conditionality, तो उनको कानून पास करना था. So what happened was that the banks then went through the law. They hired somebody and they made changes to it to make sure कि कानून पास हो जाए लेकिन उसका कोई इफेक्ट एक्चुअली ना हो. उनको जो सबसे ज्यादा घबराहट जो थी वो, तो उसमें से जो कानून जो पास हुआ था पहले in 2018, there are different things which have changed the law from before. एक तो उसमें उन्होंने ये है, उन्होंने कहा कि जो आपको मिनिमम डेट है वो लेट्स अज्यूम 10 करोड़ का होना चाहिए. दैट्स नॉट सो प्रॉब्लमैटिक. दूसरी बात ये कि अगर उनका कि जी अगर तो एग्जीक्यूशन पहले से पेंडिंग है फॉर मोर देन 25% ऑफ द कंपनीज एसेट्स, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करते, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज वैसे निकल जाती हैं. तीसरी बात ये कि जिधर मैंने ओपन एंट्री सिस्टम की बात की थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी रिपोर्ट में, मतलब कि अदालत की मर्जी है कि वो पास करे, अदालत की मर्जी है वो ना पास करे. लेकिन जो सबसे बड़े जो मसले हुए थे उसमें ये था कि एक तो उन्होंने कहा कि ये क्रैम डाउन ऑप्शन जो है वो हम नहीं करेंगे. The only option that you have is to get banks on board for an agreed plan, or else your company goes straight into liquidation. And then the final point that they said was, which the change they made was कि अगर तो आपका प्लान अप्रूव भी हो जाता है तो आपकी पर्सनल गारंटीज जो है वो डिस्चार्ज नहीं होंगी. Now, the second two elements, the no cram down and the no discharge of personal guarantees, basically makes a law useless from the perspective of a debtor. फिर मैं, आप समझें कि आप एक बंदे से कह रहे हैं कि आप अपने सारे हथियार छोड़ दें, आप मेरे पास आ जाएं. अब पहले तो आपने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ जिसके अंदर ही कैन नेगोशिएट, कि आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो अदालत से जाके कह सकता है, इवन दो इट्स वेरी रेयर, कि जी ये गलत काम कर रहे हैं, आप कम से कम ये मेरा प्लान अप्रूव करें. एंड साथ साथ उसको पता है कि अगर प्लान अप्रूव हो गया तो देन ही एंड द कंपनी बोथ गेट अ फ्रेश स्टार्ट. तो उसकी निगोशिएटिंग लेवरेज आपने सारी खत्म कर दी.
एंड साथ साथ जब आपने कहा कि पर्सनल गारंटी डिस्चार्ज नहीं होंगी, दैट मीन्स नोबडी इज इंटरेस्टेड। भाई मैं कंपनी क्यों बचाऊं अगर साथ साथ मेरी अपनी जाती लाइबिलिटी जो है वो वही रहती है और मेरा घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा उसके पीछे। Why would the owner of a company take a company into bankruptcy if at the end of the day the company is saved but his personal assets are destroyed? तो ये 2018 में कानून जो है ये पास हुआ और उसके बाद से ये आज तक मेरी नॉलेज में इस्तेमाल में it has never been used by a single debtor because it was deliberately sabotaged by the people who by the banks before it was passed. So anyways, that's my introduction to corporate bankruptcy. If you have any questions, I'll be happy to answer them. Thanks, Faisal. Thanks. Look, let me just start off, and others, please raise your hands. I'll take you in as we go along. मुझे एक बात बताइए कि बात तो बड़ी क्लियर है कि कंपनी के स्टेक होल्डर्स 3 हैं, एक क्रेडिटर्स, एक इक्विटी होल्डर्स और दूसरे वर्कर्स। तो अगर के हमने बैंक्रप्सी लॉ को लेके आनी है तो इन तीनों को एक किस्म का उसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि किसी न अक्सर तीनों ले लेते हैं। अक्सर कंपनी जब बैंक्रप्सी प्लान पेश करती हैं तो equity holders take a cut as well as the debtors and the workers also, because there's change of management, change of systems, and people are fired, people take furloughs, and all kinds of things that are done. तो ये हमारे मुल्क में तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। डू लेबर लॉज अलाउ इट? डू इक्विटी होल्डर्स, क्योंकि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है हमारे यहाँ कि इक्विटी होल्डर्स जो उनकी इक्विटी का हमें पता नहीं होता। ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी ऐसे हैं कि वी रियली डोंट नो कि इनकी इक्विटी मीनिंगफुल है कि नहीं, और अगर मीनिंगफुल नहीं है तो देन इन अ सेंस आर दे जस्ट गेटिंग आउट एंड लीविंग द डेट होल्डर्स विद द बेबी। तो ये इश्यूज टैकल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? They are tackled. For example, जो लेबर जो होती है, लेबर की स्पेशल प्रोविजन होती हैं कि दे आर प्रेफर्ड, मतलब कि उनके पैसे टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो लिखे जाते हैं कि उनको यू कांट फायर पीपल, okay, you can fire people as part of a plan, but there are provisions laid down as to how much money you need to give them, and any plan of rehabilitation needs to make provision right at the very top to protect accrued worker dues and things like that. But part of the point of a bankruptcy system is that you can, for example, get rid of executory contract. तो अगर आपने लेट्स अज्यूम आपने कोई घर किराए पे लिया हुआ अगले 5 साल के लिए, you can turn around and say मैं तो नहीं ले रहा. So the company can give away assets like that. But yes, the point of it is to have an open dialogue. But a dialogue or a conversation in which one party holds all the cards is not going to be very successful. What is the incentive for the debtor right now to engage, to give up his, his right to protect himself when he can't, he has nothing to negotiate with when it comes to the banks? वो तो फिर तल्ला ही रह गया ना. If he goes down the liquidation route or the banking dispute, so he can tell the bank कि आप मेरे साथ डील करेंगे तो मैं आपको एसेट दे दूंगा. अगर वो पहले एसेट पकड़ा देगा तो बैंक कहेगा कि ठीक है, हम तो फिर 100 के पीछे 150 रुपए लेंगे, आप घर जाए, हम आपके बाप के घर के पीछे भी आके उसको भी ले लेंगे बात. There is no sense left in it. There is no balance in there. It has been turned into another creditor-friendly law, and that's why nobody uses it. Now the second thing is कि ये बताएं कि given the fact that we have markets that don't work, for example, the equity market doesn't price equity properly. The debt market, there's no secondary market. The क्या कहते हैं, land market, as you said, real estate market, there's no market operating. So one of the reasons that the system works is because the markets work efficiently in the US, and you can price everything, all assets very well, and you've got services available that will allow you to also do the consulting work, restructuring work, etc., etc. यहाँ तो ये चीजें नहीं हैं, तो how will the system work here? Okay, we recognize the fact that there was a shortage. There would be a huge shortage of, let's say, knowledgeable people, and that's why the law built into it assistance both for the relevant creditors and debtors through what was called the ADR mechanism, the order of mediation. And there was also supposed to be a technical advisory committee which was going to advise the judges, because if a judge is told कि यार इसमें आपने decide करना है कि return on equity इधर है या उधर है ज़्यादा,
तो कम से कम उसको कोई बताने वाला तो हो. And you can't make the technical advisory committee actually binding, but the idea was it would advise the judge. So the judge there would be a certain number of people who would be examined, put on a panel, and you could ask them, okay, what's your opinion about the fiscal viability of X? And they would give a report to the judge, and the judge would then probably rely on it in 99 times out of 100. But you would have needed to build capacity, but we acknowledge that the lack of capacity was an issue, and the law was tried to accommodate it both at the level of the parties and at the level of the courts. अच्छा, हमारे यहाँ तो एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि we have no takeover market, we have no mergers and acquisition market. अगर mergers and acquisition market हो तो काफी सारी चीजें वहीं प्राइस हो जाती हैं और negotiate हो जाती हैं, and you find out fair value of assets. But a bigger problem that I see is also कि do we have properly competent, did this 2018 law set up good bankruptcy courts? Did it define the definition of a bankruptcy judge? And secondly, what about the right of appeal? I mean, जो हमारे यहाँ right of appeal है जो Supreme Court तक जाता है, अगर supposing we have a bankruptcy plan and you get a High Court stay and then a Supreme Court stay and you put it into play for the next 10 years, the asset becomes virtually useless. Dr. The bankruptcy courts, we gave original jurisdiction to the high courts. The idea was that this would be used for large, complex bankruptcy. So this is not going to be a day-to-day issue. पहले उसको एक level पे चलाते, and then वहाँ पे उसको direct high court में, because there at least you will find people of some degree of fiscal sophistication. But you can't take it out of the courts because there is a 1986 US Supreme Court judgment called Northern Pipelines versus Marathon Pipelines, which said this is a core judicial function. आप इसको उठा के bureaucrats को नहीं दे सकते, ये सिर्फ अदालतें करेंगे. So after that, the US set up specialized bankruptcy courts. ना हमारा मसला ये है, अगर आप specialized courts बनाने की कोशिश करते हैं कि लोग उसमें जाते नहीं हैं, you don't have the human resources to populate these courts at a high level. I mean, आपके पास अभी नैब के जजेस ढंग के नहीं है, आपके पास बैंकिंग के जजेस ढंग के नहीं है, तो आप बैंक्रप्सी के बना देंगे तो उन्होंने तो बेसिकली they're not going to do a sophisticated job. So the idea was to keep this at a certain level in the beginning where people would get used to systems functioning. Like take for example, I think the Diwan Suleiman के जो issues हैं, I don't know offhand, but I think वो 10-15 साल से तो चल रहे हैं because it's a huge complicated mess. And you don't actually have the legal tools to take it apart to deal with it in a consistent, coherent manner. So this was a tool primarily for large, complex bankruptcies, and to allow parties to sit together and say, okay, here we're going to make a deal, and then just take out whatever we want from this thing and pass it through the judicial filter and make it work. But in order for that to operate, कभी आपका जो plan होगा, you needed to have, you need to have negotiating parity. Or even if not parity, then you need to have some leverage on the other side. As I said, in the normal litigation system, the debtor is selling his negotiating points कि यार जब तुम थक जाओगे तो मेरे से आके बात कर लेना, ठीक है? मैं आपको, I'll give you 50 cents on the dollar. But by that time, his company is dead. And the only thing you're recovering is the inherent value of the underlying land. That's not good for society. If you want to protect society, you need a quick mechanism in order to go and make a deal and have the company transferred as a going concern. But I'm not going to, as the owner of a company, why would I transfer the company as a going concern, even if it's good for society, if afterwards you're going to come and take my house away? I'm not going to do that. You needed to have the discharge of personal guarantees. And by refusing to do that, that basically kills the law. Nobody is going to negotiate. आप equity की बात करते हैं, most of these entities other than गिनती की होंगी जिसमें बाकी आपके जो हैं shareholders are independent or the public float is enough to make a difference. These are all family-owned companies. I mean, most of the times you're talking about textile companies. Textile companies में एक सेठ होगा, उसकी बीवी होगी, उसके 2 बच्चे होंगे, उनकी बीवियां होंगी. उन्होंने कौन से कोई इंडिपेंडेंट फैसले करने? सेठ साहब ने फैसले करने.
बट यू नीड, इफ यू टेल सेठ साहब कि जी आप कंपनी के लिए आप कंपनी दे दें प्लस इतने पैसे दे दें और उसके बाद में आके आपका घर लूंगा और आपके बच्चों के घर लूंगा, क्योंकि एवरीबॉडी हैज साइंड अ पर्सनल गारंटी, ही इज गोइंग टू से आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। राइट, बिल्कुल ठीक है। But बताइए, sounds to me like it's going to be very complicated. It's not a, it's purely legal matter. The way I look at it, हम जो negotiations की जब बात करते हैं economics में, I think you might also remember the famous Edgeworth box. कि जी there is a contract curve that derives from within two people's reservation prices. कि जी अगर मुझे पता है मेरा कितना लॉस हो रहा है, अगले को पता है उसका कितना लॉस हो रहा है, तो इन बिटवीन जो छोटी सी स्पेस होती है वो हमारा negotiating room होता है. But since we don't have markets, since we don't have ability to define those reserve positions, तो हम एक बहुत बड़े एरिया में जब गैम्बल कर रहे होते हैं और negotiate कर रहे होते हैं, तो obviously वो बात नहीं बनती, and people have different negotiating positions. तो मुझे तो लगता है कि ये जजेस तो कर ही नहीं सकते हैंडल. दूसरी चीज है, जजेस में जितनी डिले है वो तो 10 साल लगा देंगे तो एसेट तो वर्थलेस हो जाएगा, और जो ओनर है उसके लिए तो फायदा ही है, बिकॉज जमीन पकड़ के बैठा है, वो कहता है चलो ये एसेट वर्थलेस हो जाए, मैं जमीन बेच दूंगा, अय्याशी करूंगा बाद में. तो इज दिस वर्केबल इन दिस सोसाइटी इवन इफ यू राइट अ गुड लॉ? Well, as I said, we accepted the fact that there is limited capacity at the judicial level and at every level, both in terms of knowledge. So, जो इसमें order of mediation था जो शुरू में, the point is, let me just walk you through the sequencing. The company comes and says we are bankrupt. Okay, the judge says fine, and then they would appoint a mediator on day one. The mediator would call in all the major stakeholders and say कि यार इन्होंने let's assume आपके 50 करोड़ रुपए देने हैं, इनके मुताबिक इनके असासे जो हैं वो 25 करोड़ के हैं, etc. Are you willing to take X? Because if you don't take X, they can cram down you to XYZ, to 50 cents on the dollar on day one. And the other guy would come in and say, no, we have a buyer for 30 or whatever. But it is to simplify this entire process as well. But the negotiating would not happen before the judge. Right now, all debate happens before the judge. The point was to outsource some of these things to actual professionals. So the mediator would sit down, try and come up with a reasonable plan which everybody would be able to sign off on. And if they didn't, he would give a report to the judge saying, this is what I think is reasonable. So we tried to assist the judge and the courts in every way possible without actually taking the decision away from them, because that makes it unconstitutional. But yes, it is a difficult thing. It probably will be complicated, but you need to do it because आपके इस वक्त इस मुल्क में you don't have a corporate rehabilitation system. आपकी कंपनी बीमार, it's like a country in which when people are sick, the only thing you can do is shoot them in the head. That's not a sensible way of going. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और बड़े एसेट्स हमारे यूजलेस पड़े हैं. फॉर एग्जांपल, आई हियर देयर आर अबाउट 400 टेक्सटाइल कंपनीज जिसमें मेरा ख्याल शायद को 50-60 पैसे बना रही हैं, बाकी दे आर काइंड ऑफ लूजिंग मनी. ऑल काइंड ऑफ एसेट्स दैट आर लाइंग अराउंड बैंकरप्ट. शाहिद साहब, would you like to ask a question? Shahid? हेलो. तो आपने जो डेड एसेट्स की बात की, द फेमस बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ द पीसी कराची, वो आई थिंक 1970 से चल रही थी. You see, that what you as want well to do as is International Hotel Lahore. International Hotel Lahore तो बिक गया ना, but you need but a after sort of 30 years. Yeah, but yes, after 30 years. और अभी जो है जो लाहौर एयरपोर्ट के साथ जो सरीना है, that stuck as well. They've given up on that. That's pretty much a dead project. But खैर वो तो उनकी लड़ाई है सिविल एविएशन के साथ. But look, all I'm trying to say is, in some cases, not in all cases, the law has advanced. These are elements that you find in the modern toolbox. It's like after the development of antibiotics, we're still saying कि हमने तो इसको ठीक करना है, हमने इसमें से जिन निकालना मार के. It might work, it might not work, but antibiotics are generally a good thing. So where the law has developed mechanisms, you should use those, you should indigenize them. And what मुझे जिस चीज पे सबसे ज्यादा गुस्सा आज भी चढ़ता है is that idiot of a guy from the World Bank who said कि जी हमारे तो असूल है ना. लाइक यार तुमने अपनी वेबसाइट देखी है,
तुम बोल बोल के कि हम ये करते हैं, हम टेक इनटू अकाउंट लोकल पोजीशन, लोकल दिस लोकल दैट, बन गया आज के अखबार में सुप्रीम कोर्ट कह रही है उन्होंने पिछले 30 साल के उन्होंने देखने हैं राइट ऑफ से। तुम्हारा ख्याल है कि बैंक जो है वो इकोनॉमिकली रैशनल एनालिसिस करेगा? सो दैट्स एन ओल्ड स्टोरी। गुड पॉइंट। शाहिद साहब गो अहेड। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, शाहिद महमूद, रिसर्च फेलो पाइड, थैंक यू फॉर दिस वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। इसके अलावा आपके आर्टिकल्स वक्तन फवक्तन जो आते रहते हैं वो भी पढ़ता रहता हूँ, ऑल वेरी नॉलेजेबल, और ये भी बड़ी एक नॉलेजेबल ब्रीफ थी। जस्ट अ फ्यू क्विक ऑब्जर्वेशंस पॉइंट, मेरे ख्याल में आप दोनों ने, आपने और डॉक्टर नदीम ने ऑलमोस्ट वो कवर भी कर लिए। एक तो सर एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, और दूसरा आपने वो जो कहा कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखिए आप बात जो करते हैं, आई एग्री कि ये इसकी कोई तुक नहीं बनती कि आपने 30 साल पहले के वो केस निकाल लिए 1970 से और कहा कि जी ये डिफॉल्ट्स होते जा रहे हैं तो ये जो है इसको एग्जामिन करें। लेकिन प्लीज ऑल्सो डू नोटिस, एंड आई एम श्योर यू वुड हैव नोटिस, कि यहाँ पे एक एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का इशू भी है, क्योंकि बैंक्स वो 70s में वो जो एक नेशनलाइजेशन हुई थी, दैट डिजास्टर, तो उसमें फिर लोगों ने एक ये निकाल लिया था कि यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि फैमिली ओन्ड कंपनीज है, उसी फैमिली ओन्ड कंपनीज एक पावरफुल फैमिली होगी, उसी का एक बंदा जो है बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बैठा होगा। अब उसमें ऐसे ऐसे लोगों ने अपने कर्जे माफ करवाए हुए हैं कि आप उनको देखेंगे कि कहेंगे कि यार दे आर बिलियनियर्स ऑफ, मतलब जो पाकिस्तान की एलीट रिच फैमिलीज हैं उन्होंने भी माफ करवाए हुए हैं, and just because they got it from national bank or some nationalized bank, तो there is always that element, there was this element। अब तो क्योंकि most of the banks are now commercial banks, private banks, अब शायद वो चीज नहीं है, लेकिन उसमें वो एक element of वो एक issue था। and I'm not sure, अब आप I would like you to comment on this, कि how much does this issue of asymmetric information and wrong priorities, मतलब प्रायोरिटी, नॉट रॉन्ग प्रायोरिटीज, लेकिन जो हमारा इशू है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच डज इट परसिस्ट? बिकॉज वी हैड वन पेपर आउट, डॉक्टर नदीम wrote it and I'm forgetting the name of the co-author, वो हमारी स्टॉक मार्केट में था। उसमें ये था कि तकरीबन इफ आई रिमेम्बर डॉक्टर साहब ने कहा कि 40 एक फैमिलीज हैं और वही इसको रन कर रही हैं, वही इसको मैनिपुलेट करती हैं। तो इज देयर दैट एलिमेंट ऑफ मैनिपुलेशन स्टिल देयर के जी वहां पे इधर एक कंपनी चल रही है, उसी का कोई बंदा उधर बैंक में उन्होंने कोई एक वो ढूंढ लिया और इस तरह का कोई सिलसिला, हाउ मच इज इट स्टिल गोइंग ऑन? अच्छा, दूसरी बात है सर, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, लास्ट वन। अच्छा, दूसरी आपने बड़ी जबरदस्त बात की, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे सर आई हैव बीन टू द कोर्ट्स, मैं मजीद ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर वो कंटेम्प्ट में बात चली जाती है। यू आर अ लॉयर योरसेल्फ। अब देखें, ये स्टील मिल्स का केस था ना, उसकी जमीन का ना। अभी हमने डेट कैपिटल की बात की कि उसमें ये हो सकता था कि गवर्नमेंट ऑफ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों ने एक प्रोपोजिशन पेश की कि जी ये वैसी जमीन पड़ी हुई है, इट्स अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, तो इसको रेंट आउट कर देते हैं, कोई इसको इस्तेमाल करेगा। तो उसमें हमारी वो जो हम लोग स्टील मिल के लोगों को पे कर रहे हैं पेंशन वगैरह, वो भी तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस, वो कहते हैं नहीं नहीं जी ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एंड एज यू कैन टेल एंड आई एम श्योर होपफुली यू वुड एग्री कि अगर बात यहाँ पे होती कि जी वहां पे सबके लिए प्लॉट्स बना दिए जाएं उसी जमीन पे कनाल कनाल के, जिसमें जजेस के भी हो, जनरल्स के भी हो, ब्यूरोक्रेट्स के भी हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को या किसी कोर्ट को कोई इतराज शायद ना होता। तो सर ये एक दो इश्यूज हैं, इफ यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट, थैंक यू। Sir, I have noted 4 issues, so let me try and deal with them, not in the sequence that you mentioned, but the way I think they make sense. आपने पहले स्टॉक मैनिपुलेशन की बात की। आई थिंक डॉक्टर साहब इज फार टू ऑप्टिमिस्टिक। स्टॉक मैनिपुलेशन, द स्टॉक मार्केट इज डोमिनेटेड बाय लेस देन 40 फैमिली, बहुत कम है। आई वर्कड ऑन अ मेजर स्टॉक मैनिपुलेशन केस, और उसमें बड़ा सिंपल सा इशू था कि देखें, वही लोग जो आपकी मार्केट में म्यूचुअल फंड ओन करते हैं, वही आपकी मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करते हैं, और वही बेसिकली आर द सेम पार्टीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन। तो इफ यू कंट्रोल सप्लाई, डिमांड, लिक्विडिटी एंड रेगुलेशन, तो जाहिर बात है सेल्फ डीलिंग तो होगी। वो एक स्टॉक मार्केट का मामला है। आई एम नॉट गोइंग टू गो डाउन दैट पाथ, बट एसेंशियली यस, इट्स ए टेरिबल, आई थिंक इट्स अ स्टॉक मार्केट इज अ रिग्ड गेम इन पाकिस्तान, उसको छोड़ दें। दूसरा आपका पॉइंट था अबाउट elite capture and sort of, let's say, conflict of interest, and how that is precisely why we जो पहला जो एनालिसिस जो था, our point was कि you need to have a party driven system। जो
this is a, you know, आप go back and think in 2002 जो main जो argument जो थी वो for example कि जी A2 bake committee होती थी कि जी सिक companies के लिए and my argument was कि जी अगर आपने कंपनी ठीक करनी है तो आपको जिसके पैसे हैं और जिसकी कंपनी है उन दोनों को आमने सामने बिठाएं क्योंकि वो सबसे ज्यादा जानते हैं. They are the ones who need to argue it out ताकि वो अगर बकवास करें एक दूसरे से कि जी मेरे पास तो इतने हैं और इतने कम है whatever. I mean they are the people who have to decide. Once you get a so-called notionally independent bureaucrat involved, तो जाहिर बात है ये चीजें होती है उसका. And the more important point was you need to have a legal system which deals with non-performing loans on a continuous basis. पाकिस्तान में होता ये था कि जी पहले जो है आप non-performing loans का कुछ नहीं करते थे वो, and you would sit on a growing time bomb. और जब वो फटने लगता था then you would come up with something like Circular 29 जो 2003-4 का जो था जिसमें you sort of paid, you know, fire sale value which is 70% of principal. मेरा एक client था, he had agreed to pay 72 crore and after Circular 29 he paid 6. तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने क्या किया था ये, but you had to then come up with a one size fits all mechanism. So the idea behind the law is to come up with something which is party driven by those whose money is involved, not by disinterested parties, because immediately उस पे elite capture हो जाता है. तीसरा आपका point जो है that is about you mentioned the steel mills case. Steel mills case पे I had worked. आपका analysis थोड़ा सा ऑफ है, but I mean in some ways steel mills में उन्होंने basically जो जज साहब का जो एनालिसिस था उन्होंने कहा था जी कि क्योंकि आपने इसको ऑन he said कि you haven't taken land value into account in a discounted cash flow basis and evaluation, and the answer is underlying asset values are not looked at when you look at a DCF valuation because you're looking at the cash flows, not at asset value, which is a liquidation analysis. अब ये जज साहब को बात समझ नहीं आई और ये अदालत को अभी तक नहीं समझ आई. उसका प्लॉट शॉट्स के साथ वास्ता नहीं था. 2005 में जब ये केस हुआ था इट वाज बेसिकली वन ऑफ योर फर्स्ट मेजर पीआर इश्यूज. उस वक्त सरकार जो थी वो इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे उनको बड़ा शौक था कि जी मैं कौम को बचाऊंगा. इट हैज टू डू आल्सो विद द बैकग्राउंड ऑफ आवर जजेस. आवर जजेस प्राइमरीली कम फ्रॉम नॉट अ सोफिस्टिकेटेड, आई एम टॉकिंग 20 years ago. 20 years ago somebody who did corporate work more often than not dealt with land. So these judges could not understand कि ये किस तरह हो सकता है कि आपने स्टील मिल्स की वैल्यू की और उसके 4,500 एकड़ की वैल्यू आपने बीच में नहीं डाली, because they want an independent income producing asset, but that was too economically sophisticated a concept for them. Now if you went and made the same argument before somebody like Mansoor Ali Shah or Munib Akhtar, they would know what you're talking about. 20 years ago they had no clue. आखिरी आपका पॉइंट अबाउट asymmetry of information. So I'm not an economist, but ये क्या हो, I think Dr. Saab will probably guide me. Isn't there like a paper called by somebody called Akerlof and the lemon situation जो गाड़ियों का जो होता है, something like that. हाँ, Akerlof Stiglitz सब का. Okay, not my field, so I'm just sort of guessing. But the point here is we're not dealing here with two strangers. We're not talking here about somebody selling a used car on a parking lot, because यहाँ पे the people who are going to fight are those जिन्होंने पैसे दिए हुए और जिन्होंने पैसे लिए हुए. अब एक हद तक तो जिसने पैसे लिए हुए उसने शायद झूठ बोलना है कि मैं तो जलील हो गया, मैं मारा गया. But the person who has lent him the money and who wants to get it back has a very strong incentive to do this properly. And within the law, what we had done was we had set up कि number one, एक इसमें तो पहले दिन आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करनी है. उसके बाद कमिटीज बनती हैं. द कमिटीज आर अलाउड टू गो इन एंड आस्क फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड टू गो थ्रू द अकाउंट्स एंड टू डिग थ्रू स्टफ देमसेल्व्स. और अगर पकड़ा जाए कि उन्होंने झूठ बोला है, देन द अल्टीमेट सैंक्शन विद इन द लॉ वाज कि द डेटर गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड यू गेट एन इंडिपेंडेंट कंट्रोलर देयर. सो दैट मींस कि द डेटर इज आउट. आपने तो उसकी कंपनी लेके एक इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ लिक्विडेटर ऊपर बिठा दिया. So we tried to accommodate that problem, as I said, to the best of our ability. जी महबूब खालिद साहब. खालिद साहब, unmute.
Ji sir, thank you very much, Faisal Saab. It was very interesting to listen to you. A bit technical, but still very informative. My question is that when we have regulators in the system which are also requiring certain parameters to be kept in mind, जैसे banks के case में non-performing loans की एक certain limit है which is allowed under the prudential regulations. तो अब उस case में we see behaviors of the firms के जो zombies में convert हो जाती हैं. जैसे हमारी colleague हैं PIDE की डॉक्टर नसीम, उन्होंने analysis किया कि about I think 30% of the firms which are engaged with the banks currently are actually not producing any profitability. So the banks are in a habit of creating a new loan against the old liability which the firms has to give. तो मेरा आपसे question ये है कि what is the role of the regulators in the system which often can delay the process of such identification कि firm is in a crisis, and second कि क्या वो इस चीज को as an early warning system लेके खुद से initiate कर सकते हैं इस किस्म का case before the company itself declares itself as a bankrupt? Sir, as I said, I would be hesitant to let the regulator do this because ultimately the thing driving this has to be the profit motive. If you are a bank and your creditor, or sorry, the person you have lent money to is basically bankrupt and you are giving him more money, then that ultimately that manager should be fired. That's why privatization of the banks has done more to cure the non-performing loan issue than anything else in history. कोई और बाहर से बैठ के नहीं कर सकता कि जी आप ये करें या वो करें या फलाना करें. But the reason why this sort of zombie company issue exists is because it's actually very difficult to kill a company. I mean, let me explain. इस वक्त आप छोड़ दें इस कानून को, भाई एक कंपनी है वो चल रही है, मैंने उसको वाइंड अप करना है, मैं खुद तो कर नहीं सकता. If I am the shareholder or even if I own 90% of the company, in order for me to file for a voluntary winding up, I have to give a declaration of solvency कि जी मेरे जेब में इतने पैसे कि मैं सारे क्रेडिटर्स को दे सकता हूँ, otherwise I go to jail. तो जाहिर बात है मैंने voluntary winding up तो करनी नहीं है. दूसरा ऑप्शन ये कि मैं कहूँ अच्छा जी मैं bankrupt हूँ, आए मेरी कंपनी ले लो, तो मुझे why would I do that? As I said, people think of their companies in very, very personal terms. Nobody is going to say कि जी आए आके मेरी कंपनी ले लें. That's not going to happen. What is the problem here is that the bank doesn't feel bank के लिए मसला ये because there is no quick way to kill a company to divide it into bits and pieces. तो बैंक में I assume is saying कि ठीक है फिर उनको पैसे दे देते, कम से कम जिंदा तो रह रही है चीज and it's not embarrassing us on our books. But all of this arises because it's difficult to kill a company and it's difficult to reorganize a company. Very good. Thank you, Faisal. I think it's been wonderful. Quite frankly, ये बहुत important subject है, बहुत important subject है. As Faisal said, कि हम जो economists हैं, we more than lawyers, we feel कि assets move करते रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि जितने assets move करते हैं, उतनी value create होती है, उतनी employment create होती है, उतनी investment होती है. एक asset फंस जाए, जैसे कि वो शेराटन या वो जो है इंटरनेशनल होटल, अब 30 साल के लिए जब इंटरनेशनल होटल फंस गया कोर्ट में, तो 30 साल के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रुक गई. उसमें जो कोई 1000 बंदा एम्प्लॉयड था वो अनएम्प्लॉयड हो गया, उसकी रेगुलर एबिलिटी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई. तो इससे पूरी कौम का नुकसान है, सिर्फ उसका नुकसान नहीं हुआ. दैट्स व्हाई वी कॉल इट डेड कैपिटल. तो कंपनी दैट्स sick, as we call it, sick industry is dead capital because it's doing nobody any good. ना बंदा चला रहा है, ना वर्कर्स ठीक काम कर रहे हैं, ना कुछ हो रहा है. It is not contributing to the tax revenue. It is not contributing to society. It is not adding employment. So it's a useless piece of equipment. तो इसलिए हम केसेस की भी बात करते हैं. फैसल ने मैं बड़ी अच्छी बात बताई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे लास्ट टाइम. वी टॉक टू Osama about the judiciary कि any asset that is stuck whether in the judicial process or in the bankruptcy process or whatever, to us economists it's a huge loss, and more importantly to the people, to the society at large. Contrary to what Faisal thinks, Chicago is not totally क्या कहते हैं against social good. It is extremely socially useful for things, assets to keep moving, to
generate revenue and generate employment. So thank you, Faisal. We shall work on this and we shall be in touch with you again to see how we can improve our knowledge of the bankruptcy court to educate Pakistani kids on this. Thank you. Thank you, Faisal. All the best. You're always Welcome, a good Dr. Thank you. Thank you.